Hello everyone, I am the teacher for this question. Let me explain the question to you now. And the question is, which one of the following is a chemical change? So the options are option A, twinkling of stars, option B, cooking of vegetables, option C, cutting of fruits, and option D, boiling of water. Okay, so we know that chemical changes में क्या होता है? These are irreversible. Okay, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है, ओके। सो इन तीनों चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ऊपर के ऑप्शंस को देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तो कोई केमिकल चेंज नहीं है, राइट। उस पर ना ही कुछ नया बन रहा है, ना ही कुछ उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है। ओके, एंड बी इज कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स में क्या हो रहा है, कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो कि इरिवर्सिबल है। मीन्स उसको अगर हमने एक बार वेजिटेबल्स को कुक कर दिया तो उसको हम दोबारा से रॉ वेजिटेबल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। एंड द C is cutting of fruits. So now cutting of fruits is also a not a chemical change because उसमें कोई नया substance form नहीं हो रहा, कोई chemical composition change नहीं हो रही, right? And similarly boiling of water. So boiling of water में just क्या हो रहा है, water अपनी liquid state से अपनी gaseous state में जा रहा है, right? This is also a reversible change. This is not a chemical change. So we can write cooking of vegetables are chemical change because when vegetables boil, then they cannot be converted to its original state. Okay, so the answer is B. Hence the answer is B. Thank you.